Hello beta, good afternoon everyone. Welcome to the third class of Unit 9 beta. And ये यूनिट है Environment and Demography के ऊपर. And today I am going to go ahead and I'm going to cover something which is known as Tragedy of Commons. दो चीजें करेंगे बेटा आज के लेक्चर में. There are two aims of today's lecture. One, we will be talking about Tragedy of Commons. Tragedy of Commons क्या होता है? We will be talking about that. And secondly, I will also be going ahead and I will be talking about the principles to avoid tragedy of commons. Just give me a thumbs up. Let me know if I am audible. Let me just see if everything is fine. My voice is clearly available. Yes, it is. Okay, good. ठीक है बेटा. तो now let us go ahead and start with tragedy of commons first. तो मैं आपको हमेशा से ये बात के लिए इनकरेज करती हूँ that whenever you go ahead and you study any topic, you need to be aware about who gave what. ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नेट के एग्जाम के लिए कि हमें ये पता रहे कि किसने क्या दिया था, which principle was given by whom. और इसलिए you need to remember the names, match the following में भी कभी कभी it comes in exam. So the tragedy of commons, it was actually given by Garrett Hardin in 1968. ये वर्ड फर्स्ट टाइम कॉइन किया गया था. इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय गैरेट हार्डन एंड इट वाज कॉइन्ड इन 1968. थोड़ा सा लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स बोलता क्या है. सो फॉर दैट वी हैव समथिंग व्हिच इज नोन एज कॉमन रिसोर्सेज. कॉमन रिसोर्सेज की दो प्रॉपर्टीज रहती हैं. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल. माने आई कैन नॉट एक्सक्लूड एनीवन फ्रॉम यूजिंग द कॉमन रिसोर्स. मैं किसी को भी मना नहीं कर सकती हूँ रिसोर्स को यूज करने से. सो इट इज अ नॉन एक्सक्लूडेबल रिसोर्स. एंड द सेकेंड थिंग, द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट आई हैव इज दैट इट इज राइवलरस. एक के यूज करने से जो दूसरे के लिए वो रिसोर्स बचता है वो कम हो जाता है. लेस इज अवेलेबल फॉर द अदर पर्सन फॉर द पॉइंट ऑफ यूज करने के लिए दूसरे इंसान के लिए जो रिसोर्स बचेगा वो कम हो जाएगा. सो कॉमन रिसोर्सेज हैव टू मेन प्रॉपर्टीज. फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट दे आर नॉन. oh, after long we have balloons coming up. It is non-excludable. I cannot exclude anyone from using it. किसी को भी मैं यूज करने से मना नहीं कर सकती हूँ. और सेकंड बात यह है कि वो राइवलरस है. एक के यूज करने से दूसरे के लिए कम बचेगा. सो टेक एन एग्जाम्पल. हमेशा वी गिव दिस एग्जाम्पल ऑफ ग्रेजिंग लैंड. ग्रेजिंग लैंड में देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रास, है ना. देयर आर टू पीपल, पर्सन 1 एंड पर्सन 2. इसको भी अपने भैंस बकरियों को यहीं लेके आना है. ही हैज टू गेट हिज शीप्स टू दिस ग्रेजिंग लैंड. और इसको भी अपने सारे भैंस बकरियों को, अपनी शीप्स को, ही हैज टू गेट इट टू दिस ग्रेजिंग लैंड. दे आर नॉट पेइंग एनीथिंग. ये इसके लिए कुछ भी मनी पे नहीं कर रहे हैं. नो मनी पेड. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल. हम किसी को भी मना नहीं कर सकते हैं ये यूज करने से. इट इज अ नॉन एक्सक्लूडेबल रिसोर्स. आई कैन नॉट say no to anyone who is using this resource because it is non-excludable, क्योंकि एक non-excludable resource है. and because it is rivalrous in nature. जब ये बंदा ज्यादा अपनी गायों को यहाँ पे चराएगा, when this person will be getting his sheep for the purpose of taking this grass, less grass will be available for the other person. दूसरे के लिए कम घास बचेगी, दूसरे की sheeps के लिए कम घास बचेगी. so it is a rivalrous product. Such goods are called as common goods. इनको हम common goods बोलते हैं. और इनकी tragedy क्या है? What is the tragedy with the common goods? The tragedy is that they are always overutilized. हमेशा इनकी overutilization होती है. There is overutilization of these resources. यही इसकी tragedy है. This itself is its tragedy. तो पढ़ते हैं बेटा. It is a tendency for any good which is rival and non-excludable to be overused and under-maintained.
तो यू आर ओवर यूजिंग इट, आप उसको ज्यादा यूज कर रहे हो, जितना यूज करना चाहिए उससे ज्यादा यूज कर रहे हो, एंड अंडर मेंटेनिंग इट, और उसकी मेंटेनेंस भी नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट प्रॉपरली मेंटेनिंग इट. As common goods are not owned, so it is difficult to prevent anyone from consuming this good. So there is no ownership defined. Because कोई ownership defined नहीं है, right? We are not able to go ahead and define the ownership. मैं नहीं बोल पा रही हूँ कि ये जमीन किसकी है, ये घास किसको belong करती है. I am not able to define any ownership कि who is the owner of this land. That is why it is leading to overutilization of the resource. इसी की वजह से इस resource का overutilization हो रहा है. It is leading to overutilization of the resource. ठीक है बेटा. Try to see now. People have incentive to gather or consume more common resource than others. Common resources, beta ये रहा example, wildlife can be subject to the tragedy of commons. तो wildlife भी एक बहुत ideal example है जिसमें tragedy of commons हो जाती है. So this property tragedy of commons ये किसने दी गई थी बेटा? Who gave this? As I told you, this was given by Garrett Hardin. अब ये प्रॉब्लम तो आ गई. अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू गो अहेड एंड हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स. इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द सॉल्यूशंस गिवन बाय हार्डन. पहले हम वो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जो हार्डन ने खुद से दिए हैं, एंड देन इन 2009 वी हैड समवन कॉल्ड एज एलिनर ऑस्ट्रॉम. 2009 में एक इंडिविजुअल आए जिनका नाम था एलिनर ऑस्ट्रॉम, और उन्होंने कुछ 8 प्रिंसिपल्स दिए. ही गेव प्रिंसिपल्स टू अवॉइड ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स. तो हम उन प्रिंसिपल्स की भी बात करेंगे कि हाउ वी कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स. समझे? बट बिफोर वी गो टू दोस प्रिंसिपल्स, हम पहले ये देख लेते हैं कि हार्डन ने अपने आप में क्या सजेस्ट किया था. तो हार्डन सेड कि अगर हमें ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो वी कैन गो अहेड एंड मेनली कम टू 2 मेन पॉसिबल सॉल्यूशन. 2 ऐसे सॉल्यूशन हैं जो हम कर ही सकते हैं. द फर्स्ट इज डिफाइनिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी स्कीम. डिफाइनिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी स्कीम. और इसी को अगर आप ध्यान से समझो बेटा, तो वी हैव ट्राइड टू राइट दिस अंडर एक्सटर्नैलिटीज एज कोस्ट थ्योरम. जब हमने कोस्ट थ्योरम पढ़ी थी तो भी तो हमने यही बोला था. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैड सेड, दैट डिफाइन ओनरशिप, राइट? व्हेन यू डिफाइन ओनरशिप द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नैलिटीज गो अवे. तो उसी को ही हार्डन ने भी लिखा था कि इफ वी डिफाइन प्राइवेट प्रॉपर्टी स्कीम, दैट मीन्स इसी जमीन को, इसी लैंड को, इफ आई जस्ट गो अहेड एंड आई डिफाइन सम ओनरशिप विद दिस लैंड, आई डिफाइन सम ओनरशिप राइट्स, I just go ahead and say कि no, the land belongs to government, ये government को belong करता है, और I go ahead and say that the land belongs to person XYZ. Once you go ahead and you define the ownership rights, तो the problem of tragedy will go, overutilization will go, और maintenance will automatically start. So this is the first thing that Hardin said कि number 1 आप क्या कर सकते हो? You can go ahead and have private property scheme given. ठीक है? This is the first thing. So this is what it is written here. A private property scheme to use them with a sense of ownership and responsibility that would prevent their depletion. अब जैसे ही हमने उसकी ओनरशिप दे दी तो वो डिप्लीट नहीं होगा उतना ज्यादा ओवर यूटिलाइज नहीं होगा. ऑन द अदर हैंड व्हाट वी कैन गो अहेड एंड डू, कंट्रोल ओवर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट पीपल हैव. अब हार्डन ने क्या बोला ना कि देखो हमारा ओवर यूटिलाइजेशन इसलिए हो रहा है बिकॉज देयर इज मोर पॉपुलेशन इन द इकोनॉमी. अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, इफ वी कंटिन्यू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एट अ वेरी हाई रेट, तो देयर विल ऑलवेज बी द प्रॉब्लम ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. टेक एन एग्जांपल. सपोज आई टेल यू दैट देयर आर 2 families. This family has 3 people, mother, father and child. And this family has 8 people, mother, father and 6 children. Who will be requiring more resources? तो इसी फैमिली को चाहिए होंगे ना. The one with more people, उनको resources भी ज्यादा चाहिए. तो Hardin said that when families have more people, तो उनके आसपास के जो free resources होते हैं, जैसे for example, suppose ये दोनों ही families forest में जाती हैं और यहाँ से wood लेकर आती हैं,
for the purpose of cooking food. तो इस फैमिली को ज्यादा वुड चाहिए हो सकती है एज कंपेयर टू दिस फैमिली, राइट? सो व्हेन यू हैव मोर पॉपुलेशन, जब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, यू टेंड टू गो अहेड एंड यू टेंड टू ओवर यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ द एनवायरमेंट। आप एनवायरमेंट के रिसोर्सेज को की भी ओवर यूटिलाइजेशन करते हो। So what Hardin said is that the second thing that we should be doing, थोड़ा एब्रप्ट है, एग्जाम में बहुत बच्चे इसको मार्क नहीं करेंगे। आई कैन टेल यू पीपल विल नॉट मार्क दिस इन एग्जाम बिकॉज यू विल थिंक व्हाट अ रैंडम ऑप्शन, ये ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है, गलत ऑप्शन होगा। बट दिस इज व्हाट ही हिमसेल्फ सजेस्टेड। हार्डन सजेस्टेड टू गो अहेड एंड कंट्रोल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ताकि हम ओवर यूटिलाइजेशन को रोक पाए, राइट? नाउ अदर देन दिस देयर आर सम अदर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आल्सो बेटा। ये सॉल्यूशन हार्डन के दिए हुए नहीं है, ही फोकस्ड ऑन दीज टू सॉल्यूशन, बट ये सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशंस हैं व्हिच कैन बी यूज्ड। सो द फर्स्ट सॉल्यूशन इज टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है, एक प्रोडक्ट XYZ हम एनवायरमेंट से लेते हैं, ये एक प्रोडक्ट कॉमन रिसोर्स है और इसका ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो इसी का कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लो ना ताकि इसका ओवर यूटिलाइजेशन ना हो, right? So if I want to avoid the over utilization of any resource, I should be going ahead and I should be finding alternative. मुझे उसका एक alternative निकालना चाहिए. When I will find the alternative, I will be able to go ahead and avoid the over utilization of the resource. ठीक है? Over consumption. Sometimes जितना जरूरी नहीं होता है हम उससे ज्यादा रिसोर्स को कंज्यूम करते हैं बिकॉज इट इज अवेलेबल एट नो कॉस्ट, क्योंकि वो गुड फ्रीली अवेलेबल है, उस पर कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, तो वी जस्ट गो अहेड एंड वी ओवर कंज्यूम द रिसोर्स। तो वी नीड टू अवॉइड ओवर कंजम्पशन एंड वन वे इन विच वी कैन अवॉइड ओवर कंजम्पशन इज बाय पुटिंग अ प्राइस ऑन द गुड। इमेजिन इफ आई जस्ट पुट अ प्राइस ऑन दैट कॉमन लैंड, अगर मैं उस फील्ड के ऊपर एक प्राइस लगा दूं that whoever gets their sheep for grazing, you have to pay an entry fees of ₹100 per day, right? So once I will put a price, then overconsumption can be avoided. So then these are some more things like social customs. तो social customs का एक example मैं आपको देती हूँ। जैसे there was something which was called as चिपकू movement, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम ट्रीज को बचा रहे थे फ्रॉम कटिंग द ट्रीज, है ना? तो हम एक तरीके से अपने रिसोर्सेस को बचा रहे थे कि इनका ओवर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ट्रीज के कटिंग का ओवर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। सिमिलरली वी कैन गो अहेड एंड वी कैन इंट्रोड्यूस सम सोशल कस्टम्स। हम कुछ कर सकते हैं कि वी शुड बी गोइंग अहेड एंड फॉर 2 months वी हैव टू गो अहेड एंड कीप द लैंड एम्प्टी ताकि वो वापस रिन्यू हो पाए, और उसी से रिलेटेड कोई कस्टम बना दो, कोई पूजा रख दो, बोलो कि अच्छा फॉर 2 months there will be some kind of prayer that will take place and nobody will cut trees, nobody will come here for grazing the land. Make some social custom, कोई एक ऐसा custom define कर दो जिसके through over utilization कम हो पाए। Government regulations, government can go ahead and bring some kind of regulation. Tradable allowance, हाँ, joint ownership is needed to control overuse. तो आप क्या कर सकते हो, you can go ahead and ensure कि आप public private partnership ले आओ for environmental goods so that over utilization does not take place. ठीक है? मेंबरशिप फीस लगा दो एंट्री पे, राइट? रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ यूजर्स, रिस्ट्रिक्ट कर दो कि इस at any time of at any point of time any mountain will only have these many users. अगर इतने लोग इस जगह पे रह रहे हैं तो we will not allow more people to come and enter, right? Then fines and penalty for overusing. तो fines लगा दो, penalty लगा दो so that people don't overuse the resources. On this basis, beta, then in 2009 we had Elinor Ostrom. Elinor Ostrom in 2009 ये एक नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं. He introduced the principle to avoid tragedy of common. क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया? He introduced principles as to how you can go ahead and you can avoid the problem of tragedy of commons. कैसे आप tragedy of commons को avoid कर सकते हो? We will go ahead and list out those principles. The first principle said define clear group boundaries. माने आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा
कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए विच इज द कंसर्न्ड पार्टी। जैसे इफ आई टॉक अबाउट दिस लैंड, ग्रेजिंग लैंड, तो हु आर द पार्टीज हु आर कंसर्न्ड विद द लैंड? कौन किस किस के काम में आ रहा है ये लैंड? इट कैन बी विलेज 1, विलेज 2, right? It can be some other person. तो who are those people who are affected from this land? कौन से वो लोग हैं जो इस रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं? And what is the resource that we are talking about? कौन से रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं? That should be defined. So we need to clearly define, number one, who are the people concerned, and number two, what is the resource that we are talking about? Both these things need to be clearly defined. So this is my first thing, beta. Please read it out. We are saying define clear group boundaries. हमें clearly boundaries बतानी है. We need to go ahead and tell who are the people concerned, and we need to go ahead and tell what is the shared resource. किस resource की बात की जा रही है? Second thing, match rule governing use of common resources to local needs and condition. अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर जगह पे एक ही तरीके की चीज चल जाए। शायद यहां पर जो जमीन है इसके मेरे को जो रूल्स बनाने होंगे यूज के वो अलग होंगे, और शायद दूसरी जगह पे जो जमीन होगी उसके जो रूल्स बनाने होंगे वो अलग होंगे। सो इट मे बी पॉसिबल दैट द रूल्स यू हैव टू मेक फॉर लैंड 1 आर डिफरेंट, and what rules you have to make for land 2, they are completely different. Why? Because there is no one rule which can fit all different kind of parties. They are different parties, ये अलग अलग हैं, अलग अलग जगहों पे situated हैं. Something that the rules that will work in Kerala may not work in Himachal Pradesh, right? So there is no one size fits all, right? The rules have to be determined by the local people. जो वहां के लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि उस जमीन का यूजेज कैसे कम किया जा सकता है according to their ecological needs. Third thing, ensure that those affected by the rule can participate in modifying the rule. अब ऐसा ना हो कि हमने जो रूल्स बना दिए हैं, the rules that we have made, वो बहुत ही stringent rules हैं और वो बिल्कुल ही नहीं बदल सकता कोई भी. This should not be the case. People should not feel suffocated. लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे इसकी वजह से तो हमारा पूरा लाइफ ही खराब हो गया, हमने कहाँ पे घर खरीद लिया, ये तो ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे. नो. So we need to make sure that the people who are using the resource, the parties who are using the resource, those villages who are using that land, they can go ahead and help in modification, right? People will be following the rules only when it's not something, it's not like a chain on their neck. ऐसा ना हो कि एकदम बंदिश सी हो, है ना? उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की अलाउमेंट होनी चाहिए. So it says that you need to ensure that those who are affected by rule, they can participate in modifying the rules. वो rules को modify कर पाए. The next thing is make sure that the rule making right of community members are respected by outside authorities. अब for example, all villages together उन्होंने इस land पे एक rule बनाया that we are putting 2 dustbins and everybody will throw all the waste in the dustbins. अब बाहर से tourism आता है, some people from outside the place come and visit the place and they don't follow these rules, right? So then it can use to again exploitation of the land, right? So we have to make sure that number one, all outside people, चाहे वो tourist हो, चाहे वो government हो, चाहे वो higher authorities हो, they recognize those rules, they respect the rules made by those local authorities, right? Next is develop a system carried out by community member for monitoring members behavior. अब how will we monitor? हमें कैसे पता कि सब इसके अंदर ही डाल रहे हैं? हमें कैसे पता कि वो कौन सा इंसान है जो इसको फॉलो नहीं कर रहा? Maybe I can put a camera, and whoever is not putting in the dustbin, maybe I can put a fine on them. तो तो आई नीड टू गो अहेड एंड आई नीड टू डेवलप अ सिस्टम. मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा which ensures, which monitors members' behavior, which ensures that people follow those rules, right? And I need to go ahead and I need to ensure that people who violate the rule,
अगर कोई रूल फॉलो नहीं करता है, रूल को वायलेट करता है, आई नीड टू इंश्योर दैट इन दैट केस आई गो अहेड एंड आई गिव देम सम वार्निंग, सम फाइन। मैं उनको कुछ वार्निंग दूं, देखो तुमने इस बार ही नहीं किया, अगली बार ही नहीं करोगे तो ये होगा, राइट? सो बेसिकली इन मेनी प्लेसेस क्या होता है ना, दैट इन मेनी कम्युनिटीज 3 वार्निंग्स दी जाती हैं, राइट? एंड इफ पीपल डोंट improve after 3 warnings also, तो उनको punishment दी जाती है, right? So basically what can happen is we need to prepare something like a system कि अगर कोई उस रूल को वायलेट करेगा, उस जमीन का ओवर यूटिलाइजेशन करेगा, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा, तो उस केस में उस वायलेटर के लिए, समवन हु इज वायलेटिंग इट, we need to go ahead and prepare some rules. Provide accessible low cost means for dispute resolution. अब सपोज एक लैंड है, देयर आर 2 villages. हाँ, विलेज 1 बोल रहा है कि विलेज 2 इस लैंड का ओवर यूटिलाइजेशन कर रहा है, और विलेज 2 बोल रहे हैं कि विलेज 1 ओवर यूटिलाइजेशन कर रहा है. बोथ आर पुटिंग द ओवर यूटिलाइजेशन बर्डन ऑन ईच अदर. बोथ आर सेइंग दैट नो द अदर विलेज इज ओवर यूटिलाइजिंग इट. तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आया जहां पर देयर इज अ डिस्प्यूट दैट हैज टेकन प्लेस, राइट, तो वी नीड टू मेक श्योर दैट एट वेरी स्मॉल फी, मे बी यहाँ पे कोई और पंचायत राज सिस्टम बिठा दो या कुछ कर दो, at very less fees the dispute can be resolved. वो dispute resolve हो पाए, that is also required. At last beta, build responsibility for the government governing the common resource and nested tier from lowest level to the entire interconnected system. अब इसका क्या मतलब है कि हमें एक छोटे से सिस्टम से शुरू करके इसको बड़ा सिस्टम बनाना है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी कैन डू नाउ, जैसे दिस इज अ रिवर, दिस रिवर इज गोइंग इनटू अ सी, है ना, ये सी इज मीटिंग विद द ओशन. अब ये रिवर जिस जिस स्टेट से पास हो रहा है, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, different states will take care of river in that portions. फिर जहां पर ये sea है, that country will take care of that sea, that it is clean, it is not polluted, and then this ocean will be spread across countries. तो ये जितनी भी countries के across ये ocean spread है, they will all take care of this ocean. So we will start from a local level and we will go to a national and international level through interconnections. ठीक है, तो this is what it is saying. Build responsibility for governing common resource and nested tiers from lowest level to entire interconnected system. But these are the 8 principles of tragedy of commons, which were given by Elinor Ostrom in 2009. The principles are very important and please go ahead and revise these principles. Okay, ठीक है बेटा. So this is it that I wanted to discuss today. I will again go ahead, meet you Monday, same time, and we will take another topic for the point of discussion. ठीक है बेटा. Okay, thank you.